Oh boy, where do I start? So, yes, the title is right, and the thumbnail is also not a clickbait. So, hi everyone, welcome back to my channel Achieving Alpha, and welcome back to another video. And yes, definitely you read the title and the thumbnail right. Recession is on its way, and this has been confirmed by none other than the Fed chairman, Jay Powell, in the meeting today that was hosted in Jackson Hole, Miami, USA. So I have been discussing about the possibility of a recession since Feb of this particular year, looking at the trends in the bond market and काफ़ी सारी चीज़ें we saw and basis that I was warning of a recession, and now even the Fed chairman has basically said himself कि a recession is inevitable. So let me first try to summarize what all did he say. And I know कुछ लोगों को मेरा इतना bearish होना शायद इतना अच्छा नहीं लगता, and they are like they have a very unrealistic expectations from the stock market that the market right now is somewhere close to what 17,500 to 18,000 levels, right? And there could be multiple reasons, right? They must have heard it on TV, or their favorite YouTube influencer must have told them that the markets are going to rally, there's a new bull run, blah blah blah. All that is crap. And you need to understand, right? It's your hard earned money. You shouldn't really just put it somewhere because someone says so. And even if I'm telling you something, I try to have some strong justification behind whatever I'm saying. तो चालू करते हैं पर्टिकुलर वीडियो. आई विल ट्राई टू समराइज व्हाट जे पावल जस्ट सेड इन द मीटिंग इन जैक्सन होल. So he started off with saying that the long-term inflation target for the US is close to 2%, which has been the normal thing in the US for a while. In India, it's close to 6.5 to 7%. That's what we have been seeing at an average, maybe even 6%. That's irrelevant here. But yes, he started off by saying कि US का जो inflation है, that's what they expect is 2%, right? And currently it's standing at 8.5%. So now, what Powell wanted was that he basically said that we are very much committed to reducing the inflation and getting it down to 2%. And trust me, the journey from 8.5 to 2%, that's not very simple and very straightforward, right? There are going to be lots of trade-offs and sacrifices जो on the way रहेंगे when you're going from 8.5 to 2%. It's definitely not simple. So after that, what he said was that we are going to make sure that whatever we will do to control the supply and demand, right? So indirectly, what he meant to say was that there is no other way to bring down the inflation. The only sort of way is to reduce demand, to slow down the economy, or in other words, cause a recession. And trust me, you can read more about the economics and how does macroeconomics come into play. But definitely, you must understand that the only way here, because the inflation is so high, there has been a lot of money printing in the system in the last 2 years. So certainly the only sort of way that Fed sees here is to crash the economy, is to slow down the demand. Next, he talked about unemployment. So he told that the unemployment is at a record level low. There are close to 10 million jobs in the US that are present right now. But he did say that when they plan to slow down the demand in the economy, that's going to cause a lot of unemployment to be rising once again, and there are going to be a lot of job cuts and layoffs as well. So you must have already seen, right? Like, it's irrelevant of which industry you sort of work in. You must have seen that एक अच्छा खासा hiring slowdown आ चुका है. Even many companies are laying off employees. So yeah, that's what a recession is, right? There is lesser demand, there are lesser jobs, and the economy is moving very slowly, right? And they have to do this, right? They have no other choice. So this is what he sort of tried to say in his overall, 10-minute speech, if I'm not wrong. And the markets haven't taken that nicely. So let's start by looking at the global futures, and it's definitely not a very pretty sight. You can see Dow Jones almost 3% के आसपास down है. S&P 500, which consists of 500 stocks, if this index is significantly down, it means कि market का जो overall breadth है, that is very much negative, because you can understand 500 stock होते हैं. There is a lot of diversification that is there in this particular index, and these are some of the largest companies in the US, right? And that itself is down 3.5%. I don't need to explain further what's happening, right? US का tech index, which is Nasdaq, that is down for more than 4%. So certainly, these are not like very normal scenarios that you observe on an everyday basis. So certainly there is a lot of issue. Talking about Nifty, so I think SGX Nifty close ho chuka hai. It's almost 150 in the night.
एंड आई थिंक 2 बजे के आसपास क्लोज हो जाता है. एनी वेज यू कैन सी दैट जो निफ्टी का फ्यूचर्स था दैट क्लोज समवेयर क्लोज टू 17,650 एंड यू कैन सी यहाँ पे जो फ्यूचर्स है दैट इज़ एट 17,450 राइट. सो अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि मंडे मॉर्निंग को हाउ दीज फ्यूचर्स टर्न अप, बट definitely if it stays the same then we are expecting a 200 point gap down on Monday, which is definitely not something what you would want to look for, especially अगर आप call buyer हो या फिर if you have sold naked puts then I'm sorry to say you really don't care about your money because बहुत बार बोला है यार, this is a market where you cannot have overnight naked option selling position open, right? It will destroy you someday. एंड अभी तो सिर्फ 200 पॉइंट गैप डाउन है. अब ये इससे कम होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स कि मंडे को इनकी ओपनिंग कैसी होती है. बट डेफिनेटली द फेड हैज़ टेकन एवरी वन बाय सरप्राइज एंड दिस इज रियली गोना कॉज अ लॉट ऑफ पेन टू अ लॉट ऑफ पीपल. एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द बॉन्ड मार्केट्स एंड सी कि बॉन्ड मार्केट पे उसका क्या फ़र्क पड़ा. वट एवर जे पावल जस्ट सेड. तो वी आर गोना कंसिडर द यूएस बॉन्ड मार्केट प्राइमरीली. सो यू कैन सी सारी बॉन्ड यील्ड्स ऑलमोस्ट स्पाइक करी है एंड दिस इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव राइट. 20 ईयर एंड 30 ईयर यील्ड इज़ फॉलिंग. तो अगेन हर बार बात करते ही हैं. सो दैट्स मीन्स दैट द यील्ड कर्व इज सॉर्ट ऑफ फ्लैटनिंग वंस अगेन एंड दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द स्टॉक मार्केट इन जनरल राइट. एंड यू कैन सी कि इन्वर्जन पे भी काफ़ी अच्छा खासा इन्वर्जन इज़ क्लियरली विजिबल हेयर. 2 ईयर का जो यील्ड है दैट ऑलमोस्ट मेड हाई ऑफ 3.45. करंटली 2 ईयर एंड 10 ईयर के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट राइट. एंड दिस इज समथिंग विच कांट बी इग्नोर्ड. एंड फॉरगेट दैट even 3 months and 10 year का जो difference है that is almost 15 basis points right now. So it has almost sort of flattened. तो this is again not very good और definitely इसका बहुत ही negative impact देखने को मिलेगा on Nifty. And certainly a lot of people say कि यार retail बचा लेगा market को, but I think you should spend more time on studying about the market and how does this market sort of work. डेफिनेटली इफ़ देर इज़ अ रिसेशन इन द यूएस उसका इफेक्ट इंडिया में भी आएगा धीरे धीरे एंड इट विल बी अ ग्लोबल इम्पैक्ट राइट. इट्स नॉट लाइक कि यूएस अगर रिसेशन में जाता है तो इंडिया विल नॉट सफ़र और एनी अदर कंट्री वुड बी स्पेड. इम्पैक्ट कम ज़्यादा ज़रूर हो सकता है बट डेफिनेटली देर इज़ एन इम्पैक्ट. अभी भी आई एम ट्राइंग टू जस्ट डू माई पार्ट बिकॉज ठीक है यू माइट से मेरी बियरिश पोजिशन है, आई हैव एडमिटेड ओपनली and there might be a bias and definitely there is a bias right. I do have my positions open but certainly यार थोड़ा सा I would request everyone to think a bit sensibly on what has been happening right. डेफिनेटली काफ़ी सारी बातें हम कंटिन्यू कर सकते हैं. देर इज़ अनदर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड राइट, दैट इज़ द फाइनेंशियल क्राइसिस इन द चाइना राइट. तो चाइना में भी काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही है. people are not able to withdraw their money from the banks. There have been riots on the streets. A housing bubble is popping in China and there are like tons of issues on China as well. तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा बट इन जनरल यू नीड टू नो कि देर आर जियो पोलिटिकल इशूज़. रशिया यूक्रेन इज स्टिल नॉट सॉल्व. China Taiwan is another issue which is popping up. China again has a lot of stuff going on within themselves like the housing market bubble, the financial crisis and whatnot. And now it's pretty clear from Jay Powell's speech that the only way that they have to bring down inflation is to crash the economy and millions of US citizens are going to face the pain of that. He has clearly said that, but what he meant was that there is a necessity to bring down a pain in the short term in order to fix things long term. तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली. आई वुड हाईली encourage you to study about whatever all he said. आज का FII डेटा कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं है. यू कैन सी 51 करोड़ की सेलिंग है एंड DII का डेटा इज़ ऑलमोस्ट 450 करोड़ की बाइंग. सो अगेन ये भी कुछ ज़्यादा रह नहीं रहा है डेटा. एंड येस फॉरगॉट टू शो यू क्रिप्टो में बहुत ही भयंकर फॉल आया है. सो अक्रॉस द एसेट क्लासेस दे हैव बीन वेरी गुड फॉल विच वी हैव ऑब्जर्व्ड राइट आफ्टर जे पावल फिनिश्ड हिज स्पीच एंड सर्टेनली दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड सिनेरियो राइट. देख सकते हो स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट जितने थोड़े मोड़े स्टॉक्स आए ऑब्जर्व इन द US स्टॉक मार्केट, ऑल ऑफ देम आर डाउन. द हैवी वेट्स आर डाउन. एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, PayPal and everything is down at this particular moment and the growth stocks have been hammered badly as well. SoFi, Palantir, Coinbase and everything has gone down into the red territory today. तो एक बार ज़रा डेटा भी देख लेते हैं FII का कि what's coming on that front. तो FII ने सर्टनली यहाँ पे पॉजिटिव नंबर दिख रहा होगा बट यू कैन सी कि इन्होंने मोस्टली शॉर्ट्स निकाले हैं, लॉन्ग्स भी निकाले हैं बट इनका जो नेट नंबर है दैट इज समवेयर क्लोज टू 40% विच आई वुड कंसिडर एज बियरिश राइट. अभी के लिए इट इज़ बियरिश.
एंड स्टॉक फ्यूचर्स का जो नंबर है दैट इज़ ऑल्सो हैड कम डाउन. तो अगर देखोगे सो ऑलमोस्ट ऑन 16th अगस्त दिस नंबर वॉज क्लोज टू 60%. और ये धीरे धीरे नीचे आता है. इट्स नॉट लाइक एक दिन में 4-5% नीचे आ जाए. दिस वॉज बाय द वे अ वेरी ट्रमेंडस रिडक्शन. यू कैन सी कितने ज़्यादा लॉन्ग्स इन्होंने कल क्लोज किए हैं मंथली एक्सपायरी में. दिस इज़ डेफिनेटली नॉट गुड. एंड ऑप्शन एक्टिविटी की बात करूँ सो सिंस देयर वाज एन इवेंट तो इन्होंने अच्छे खासे कॉल्स भी बाय करे थे, पुट्स भी बाय करे थे. बट पुट बाइंग थोड़ी सी ज़्यादा थी, ऑल्दो दे इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट. बट द मार्केट हैज़ क्लियरली गिवन इट्स साइन. फेड ने बोल दिया है, एसेट क्लासेस पे उसका रिएक्शन दिख रहा है. आई डोंट नो इधर से कितना बाउंस एंड ऑल आएगा. बट जनरली आई हैव रेयरली सीन स्टॉक मार्केट गोइंग डाउन इन अ वन सिंगल लाइन, राइट. बाय कोई कर ही नहीं रहा है. देर इज़ ऑलवेज अ सेलिंग प्रेशर ऑन द स्ट्रीट. And that's what you can see, right? There is blood on the streets, definitely, and it's not a very pretty sight. तो नास्डैक यू कैन सी एक ही दिन में अच्छा खासा 500-600 पॉइंट फॉल कर चुका है, राइट. और निफ्टी में ऐसा फॉल आ जाए अगर तो क्या होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्दो द डायनामिक्स ऑफ द मार्केट्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन द लास्ट 2 years, but certainly anything which affects US will not have any impact on us. That is a foolish statement to make, right? Everything is connected. There are economies which are connected to each other. Similar way में अगर चाइना की इकोनॉमी if it goes for a toss then it will have a direct impact on US, India and many other countries, क्योंकि चाइना exports a lot of things to a lot of countries, right? Again बहुत ज़्यादा कुछ और ज़्यादा है नहीं मेरे पास बात करने के लिए. बट डेफिनेटली आई एम अगेन ट्राइंग टू गिव आउट अ वार्निंग इन दिस वन. जो भी लॉजिक थे मेरे बियरिश होने के वो सब मैं दे चुका हूँ. आई थिंक टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट आई ट्राई टू अवेयर पीपल एवरी डे. इतने लॉजिक वहाँ पे बताए हैं. पुराने वीडियोस देखोगे रिसेंट वाले जितने भी हैं 5-10 लास्ट के, वहाँ पे इतने सारे लॉजिक शेयर किए हैं. सो सर्टनली देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ है नहीं. द ओनली सॉल्यूशन विच इज़ देयर इज टू क्रैश द इकोनॉमी. दैट्स व्हाट द फेड चेयरमैन हिमसेल्फ सेड टुडे. तो बाकी आई थिंक यू आर वेरी लर्नड एंड इंटेलिजेंट पीपल. यू आर very much intelligent to make your own decisions, and I'm sure that barring a few people, we are a serious community. We are a very smaller community, but I think that we are very much serious. There are like few 2-3 trollers who are not even trollers. They are just venting out the frustration. जो 2 दिन का फॉल आया मार्केट में, आई थिंक उसमें आधे लोग साफ़ हो गए. सो एनीवेज आई थिंक दिस वाज अ हेल्पफुल वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए जिन्हें नहीं पता कि आज क्या हुआ, जैक्सन होल में क्या मीटिंग थी, किस बारे में थी, व्हाट वाज द एजेंडा. So certainly thoda sa I think you must be having some caution here. Definitely do take your own decisions after doing a lot of study. And last thing that I want to say is that it's your hard-earned money. Don't just put it somewhere just because someone is asking you to, and that includes me as well. So just to clear that. So definitely thank you so much for watching this video till the end. And certainly the intent is not to spread panic. The intent is just to spread awareness amongst people and just try to save people from investing at these high levels. And especially last tip that I want to give in this particular video is stay away from Adani stocks. If you have invested at lower levels, it's very good. But अगर ऊपर खरीद रहे हो and you're continuing to buy, you might be making the largest financial mistake in your whole life. Yes, that's a bold statement, but do think about it. So thank you so much for watching this video till the end. और रात के 2 बज रहे यार. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दीज पर्टिकुलर वीडियोज़. सो डेफिनेटली ऑल आई वुड रिक्वेस्ट इज़ एक लाइक ठोकते हुए जाना. ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए बोलते बोलते. सो येस, डू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो. कोई और थॉट्स है, सजेशंस है, कमेंट्स में डू लेट मी नो. एंड इफ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम then do subscribe this channel for more such content. Thank you so much for sticking around till the end. Have a good day, take care, and have a good weekend. Bye bye. See you in the next video.